The probability of questions coming from the sustainability part is very low because UPSC hasn't explored that many questions on textile industry itself. You have to study it from two aspects. First is geography, where you would be reading the locational factors. Jinning is the procedure by which the cotton yarn is separated from the seed. Especially the people writing mains this year again. Surat, Bhiwandi, Erode. These are the some areas where weaving clusters are present, जहाँ से fabric और garments निकल के आते हैं. Today's class will be divided into two parts. We'll be taking a few topics today and a few topics in the next class or some online class in between, because there are a number of conceptual topics today. Okay, now who all are in their first three classes? And the questions जो टेस्ट में आएंगे that would be based on what I teach today from समाचार मंथन, और जो आधा हम आज नहीं पढ़ेंगे अगली बार या मिड वीक में पढ़ेंगे, that might come in the next test. Okay, so we will start with textile industry. Open that article. Now, when I say textile industry, what is the first thing that comes to your mind? Raw material. Okay. So, if you see the article which is there, the article is on the sustainability part of textile industry. The probability of questions coming from the sustainability part is very low because UPSC hasn't explored that many questions on textile industry itself. So when you are studying for textile industry, there are two things, and everybody giving the mains this time have to keep this in mind. You have to study it from two aspects. First is geography, where you would be reading the locational factors. And then you'll be studying this, or there's a probability of this particular topic coming under economics, under industry infrastructure, or वो वाला जो point. And this is again a second dimension which is there in your Samachar Manthan, that is the sustainability part. But yes, this will be a very important value addition for your answers when you write, because you can cite examples from the textile industry. Within the textile industry, the most important topic is cotton textile industry. If you see any articles of Business Standard, Economic Times, Hindu maybe, the example which is often cited is of cotton industry, because it is one of the most important industries amongst all the textile industry, and India is the second largest producer of cotton as well. So we will be taking cotton industry first in bit detail, then we will be coming to what is there in the Samachar Manthan. So if I say cotton industry, can anybody tell me if I have to write the supply chain of cotton industry? Supply chain मतलब farm से industry तक, production से industry तक. What are the various facets? First is cotton cultivation. Think it from industrial perspective. So here the primary activity is cultivation of cotton by farmers. What are the major regions of cotton cultivation? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना. वो अभी होने चालू हुई है जब से टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, बीटी कॉटन आया है, बाकी सारी. वो जो स्पेसिफिक एरियाज में होता है जस्ट टू सप्लाई टेक्सटाइल्स टू द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ वो पंजाब और इस
Then who are the stakeholders here? जो यहाँ पे involved है? This is important. First है farmers. Then और कौन involved है? गवर्नमेंट तो हर चेन में होगा फिर वैसे. I'll say seed companies and fertilizers and pesticide companies. All the first timers you are able to understand. Then from cotton cultivation, the next is procurement and ginning. What is ginning? Jinning is the procedure. No, is the procedure by which the cotton yarn is separated from the seed. अभी यहाँ पे जिनिंग और प्रोक्योरमेंट जब मैं लिख रहा हूं तो एक्टिविटीज दो होंगी. फर्स्ट प्रोसेसिंग ऑफ द कॉटन सीड्स एंड देन कॉटन यार्न, फिर क्लीनिंग एंड देन यू नीड ट्रांसपोर्ट टू प्रोक्योर. 3 एक्टिविटीज हुई. हु आर द स्टेक होल्डर्स हियर अगेन? Jinning mills, traders, more or less these are the stakeholders. So I can write mills and traders. Understand this part very carefully because this you will not find anywhere. और जब इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आएगा कॉटन टेक्सटाइल, आप रैंडम पॉइंट्स लिखोगे, लो रॉ मटेरियल, हाई रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टीज, लॉजिस्टिक्स, वैसा नहीं लिखना है. इफ इट इज अ इकोनॉमिक रिलेटेड क्वेश्चन, आई विल टेल यू फ्रॉम हियर हाउ विल वी गो टू द आंसर पार्ट. एंड द रीजन व्हाई GS3 में हमेशा पीपल आर स्टक इन मिड लेवल मार्क्स. इफ यू सी GS3 फील्स वेरी इजी, क्वेश्चंस वहां पे डायरेक्ट आते हैं, बट मार्क्स जो है वो GS1 या GS2 में हमेशा ज्यादा रहता है या फिर एथिक्स में भी रहता है. बट GS3 में द मेजर इशू व्हाट इज देयर? जनरल पॉइंट्स होते हैं. तो दिस इज आफ्टर प्रोक्योरमेंट एंड जिनिंग. द नेक्स्ट इज स्पिनिंग. सो हियर you remove yarn from the seeds. Now you will produce yarns at a large scale. जो यहां से जो प्रोड्यूस होता है इसे लिंट कॉटन बोलते हैं. कहां से? यहां से जिनिंग से जो प्रोड्यूस होता है, दिस इज लिंट कॉटन. नाउ दिस लिंट कॉटन इज स्पन इनटू बिगर yarns in spinning mills. So these are the cotton clusters which you will find in Coimbatore, Ludhiana, Ahmedabad, Maharashtra regions maybe. So these are the clusters of cotton production which you will find in these area. अभी यहाँ पे stakeholders again कौन होंगे? Spinning mills and yarn traders. So spinning में you have spinning mills and yarn traders. Then after this you move to, as Suraj said, weaving. Now what happens in weaving? The yarn जो produce हुआ था, that is converted into fabric at looms. So this is जहां पे actually the products which are made are then moved into market. But here the major function is first weaving, then knitting. So what is knitting? Knitting जो टी-शर्ट्स और वो सब बनते हैं, या तो क्लॉथ बनता है which is फैब्रिक जो बनता है, या फिर प्रॉपर क्लॉथ भी इसी
स्टेज पे बनते हैं. Now these clusters you will find particularly at, write down these places को कैसे यूज करना है, again tell, especially the people writing mains this year again. Surat, Bhivandi, Erode, these are the some areas where weaving clusters are present, जहां से फैब्रिक और गारमेंट्स निकल के आते हैं. भिवंडी, इरोड. Then the next part is processing. Processing में dyeing, printing, finishing. This is the last stage of production of any garment. तो ये वाला क्लस्टर अगेन सूरत, पानीपत, यहाँ पे ये वाला स्टेज आ जाएगा. After that, you move to distribution and retail, and then finally it moves to consumers. So it's very important for you to remember this chain: cotton cultivation, procurement, ginning, spinning, weaving, processing, distribution and retail, then to consumers. The reason being, यहाँ पे दो क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर इससे क्वेश्चन आएगा ही नहीं कॉटन कल्टीवेशन से. पहला है लोकेशनल फैक्टर्स, सेकंड चैलेंजेस, इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रहा है. So these are essentially going to be your points. If you understand the supply chain, तो सप्लाई चेन में कहां कहां प्रॉब्लम हो सकता है, a general thinking mind can tell. जैसे अगर कॉटन कल्टीवेशन की बात करूं, द फर्स्ट स्टेज, फिर ये वाला इंडस्ट्री स्टेज आ गया, और फिर लास्ट को ब्रांडिंग, मार्केटिंग, वो वाला स्टेज आ गया. ध्रुव, दिस विल बी देयर इन द नोट्स व्हिच आई विल गिव. सो हाँ, जो प्लेसेस की फिर मैंने बात की है, स्पेशली जब मेंस के आंसर लिखोगे, व्हेन यू आर राइटिंग से दिस वीविंग क्लस्टर्स या गारमेंट क्लस्टर्स like in Surat, Bhivandi, etc., that will add specificity to your answer. अभी वो करंट अफेयर्स में शायद आए नहीं आए, but your answer में it will come across as examples. So this is the entire points how you are going to write. अभी जैसे मैं challenges की बात हुई, तो मैं अगर पूछूं कॉटन कल्टीवेशन में क्या challenges है, first and foremost challenge of cultivation is low productivity. So India's average yield is far below the global average. Average yield, it is somewhere around, not the global yield, actually it's far below the potential yield. India's potential yield is somewhere around 1500 kg per hectare. Yield is the amount of production per unit area. But India's yield right now is somewhere around 500. So first is low productivity. Then the second is labor intensive weeds. Black soil mein, what are the characteristics of black soil? Dhruv, Naveen, what are the characteristics of black soil? Rich content. What is the basic main characteristic of black soil? Porous होती है, which is alternate drying and wetting, is the chief characteristic of black soil. Now, manual weeding in black soil is costly, and lack of modern herbicide tolerant seeds further enhances the weed management issue. पहला तो मैनुअल वीडिंग ब्लैक सॉइल में कॉस्टली होता है. सेकेंड चीज, द सीड्स विच इज प्रोड्यूस्ड, हर्बिसाइड टॉलरेंट सीड्स आर इवन मोर कॉस्टली. दिस इज द सेकेंड पॉइंट विच इज ऑल्सो कॉज ऑफ low productivity. Then the third is
the environmental problem, that is environmental stress due to heavy water usage and pesticide dependent. Understand, कोई भी crop, if any crop is heavily dependent on pesticides, it will need more water. Correct. Then you have finally income volatility due to market fluctuations, input costs, which further leads to debt and farmer hardships. Example, Maharashtra, cotton belt. So now if you see, जो पहला supply chain था, what I just did, challenges में, low productivity of cotton cultivation, farmer suicides due to low income, seeds का issue, fertilizers and pesticides का issue. Now this is how you are going to remember the entire cycle कि इसमें हो क्या रहा है. Once you understand the supply chain और हर point में क्या क्या हो रहा है, then it will become easy for you to write as many points as possible whatever UPSC asks. And if you feel कि वो दो पार्ट में है कि what steps government should be taking, तो आधा आधा कर लो. कल्टीवेशन वाले साइड में प्रॉब्लम्स दे दो, जिनिंग वीविंग साइड में वो दे दो सॉल्यूशंस. नेक्स्ट इज जिनिंग. सूरज, आई टेल द क्लस्टर्स. कोई पूछ रहा था, फिर वो नोट्स में होगा तब लिख लेना. जिनिंग, जिनिंग में क्या प्रॉब्लम है सूरज? यू कैन टेल बिकॉज यू सेट द एंटायर सप्लाई चेन. Yes, this also can be a point through. पॉइंट्स बहुत होंगे. जैसे कॉटन कल्टीवेशन साइड में तो और भी ज्यादा पॉइंट्स आते रहेंगे जो अभी एक्सप्लोर करते रहेंगे. जिनिंग, अभी इसमें क्या इशू है? फर्स्ट इज जिनिंग इंडस्ट्री जो है इंडिया का, दैट्स वेरी स्मॉल स्केल. तो वेरी स्मॉल यूनिट्स वर्क towards this particular process in producing the lint cotton, which then acts as a raw material for the next stage. Now, since they are small scale, there is first absence of control because it's not accountable to anyone. And second, they're inefficient because by the very nature of it being small scale. And due to these factors, quality का issue रहता है because small scale में major issue क्या होता है? Uneven quality control. There's a very old lecture, I think 2025 batch students would be there. It talked about standardization. Standardization के facets and standardization of product is a very important factor for Indian products because that is what India has been lacking. Small scale unit में problem क्या होता है? This standardization का अगर मैं easy शब्दों में समझाऊं, जैसे suppose if I am producing something at my home, मैं अपने हिसाब से प्रोड्यूस कर लिया. Now he is producing something at his home, he does it according to your capabilities. अभी उसको हम मान लो एक कंपनी को बेच रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहे हैं. We are giving the same product of two different qualities as per our own abilities. Now the company has to use the different kind of products to produce same material. तो वहां पे again the issue would be the issue which the company would be facing is to reorient its processes to manage various kinds of products. And this is again a major factor or a major challenge in this particular industry. Then obviously since they are small scale, the use of technology would be lower. And the third aspect, workers are hired seasonally in Jinning industry. हाँ, that is the major reason. क्योंकि इंडियन कॉटन इंडस्ट्री एक्चुअली मेजर जो फंसता है यहाँ से यहाँ से फंसना चालू होता है. एंड स्ट्रेंजली एट द लूम सेक्टर इंडिया हैज स्टिल डेवलप्ड, बट दिस इज वेयर द मेन वो बोलते हैं ना फंडामेंटल इशू यहीं पे जहां पे होता है. करेक्ट. द नेक्स्ट टू एज सूरज जस्ट पॉइंटेड आउट, सीजनल लेबर क्वालिटी इश्यूज तो है ही, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड लैक ऑफ मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस. तो टाइम टेकन for a particular raw material to enter here and move to the next stage becomes more. So ultimately if at this stage only time का issue हो रहा है तो ये पूरे
स्टेज पे दिखेगा. Then you have spinning. Now in spinning, the major issue is weak demand, and weak demand for cotton yarn, because especially this has happened especially after there has been a shift towards man-made fibers and synthetic fibers. तो इसकी वजह से इसका profitability पे effect हुआ है. That is the third point. And many mills run at 50 to 70% of the capacity. तो full capacity utilization नहीं हो रहा है. And why there's no full utilization of capacity? फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, उसी से लिंक है. लेबर. अरे शिफ्ट टुवर्ड सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर्स हैज हैपेंड, तो डिमांड इज लो. अगर डिमांड इज लो तो वो प्रोड्यूस करके क्या करेंगे? देन द थर्ड पॉइंट इज हाई पावर कॉस्ट्स. स्पिनिंग इज अ पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री. नाउ जैसे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाता है कॉटन पे, या फिर से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस राइजेस, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट इस स्पिनिंग स्टेज पे दिखता है. एंड टेक गैप, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, पूरा इस प्रोसेस में दिखता ही दिखता है हमेशा, विच इज अ मेजर पेन पॉइंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. थर्ड पॉइंट हियर इज there has been a rise in intense competition from countries like Vietnam and Bangladesh, which have grown heavily in the apparel industry sector. क्या डिपेंडेंट भी तो हमारे ऊपर ही है, रॉ मटेरियल नहीं है, बट चीज है रॉ मटेरियल पे हमारे ऊपर डिपेंडेंट है. रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा है या एप्रिल का कॉस्ट ज्यादा है? सेल तो वो ज्यादा ही करेंगे. सो दिस इज अभी जैसे द नोट्स विच आई विल बी गिविंग यू, उसमें हर स्टेज का अगेन चैलेंजेस और वो सब एलैबोरेटेड होगा. एंड दीज आर द challenges which you are going to write. वो GS1 में पूछे या GS3 में पूछे, because supply chain में you are as such using a lot of technical terms. जब मैं clusters की बात कर रहा था, it will be there in the notes. तो when you are writing a geography answer, the same answer आपको terms के साथ खेलना है. For example, जैसे वहां पे लोकेशन थ्योरी के बारे में आप जब ज्योग्राफी में व्हेन यू विल स्टडी अबाउट लोकेशन थ्योरी, देन लोकेशन थ्योरी विल कम इनटू पिक्चर. सेकंड, यू विल बी राइटिंग अ लॉट अबाउट द लोकेशंस एंड क्लस्टर्स की कौन सा रॉ मटेरियल कहां पे पाया जाता है. व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स में द सेम थिंग यू आर गोइंग टू राइट, सेम पॉइंट्स, उसमें ज्यादा स्कीम्स आ जाएंगे. व्हाट आर द स्कीम्स व्हिच इंडिया हैज बीन टेकिंग, और उसमें इश्यूज कहां पे है, इंपोर्ट ड्यूटी कहां पे है, कहां पे नहीं है. तो सेम क्वेश्चन, क्योंकि why I'm telling this, because GS3 and GS1 is very tricky. If you see 2016 question paper, urban floods का एक क्वेश्चन आया था, और उसी साल GS1 में भी आया था, GS3 में भी आया था. That does not mean you are going to write the same answer there. It's very important to use jargons as per the paper. So please write down this question. We'll take this question and discuss it both for GS1 and GS3. पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर डिस्कस करेंगे. ध्रुव, that is correct, but that is again one part of it. ये ना आप उसमें जो
सप्लाई चेन लिख रहे थे, what Dhruv is basically saying कि India is also very big importer of first copies and second hand clothes, जो सरोजिनी मार्केट, पालिका बाजार वहां पे जैसे मिलता है, या फिर बहुत छोटे छोटे शॉप्स भी हैं दिल्ली में. दैट इज ट्रू, बट वो वाला ना डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग वाले पॉइंट में आ जाएगा. यू कैन ऑब्वियसली राइट दैट, इट्स अ गुड पॉइंट. जैसे पॉइंट जितना रियलिस्टिक, लाइक दिस पॉइंट व्हाट ध्रुव सेड, UPSC says general awareness, general studies. There's a reason why it is called as general. You need to know the application in real life world. The point you know that. For example, जैसे अगर मैं I'm deviating from the topic with respect to mains answers. जैसे अगर questions आता है probity in governance के ऊपर, ethics में, you can cite the tragic incident which happened at Rouse, because you were there, you were in and around somewhere. And especially in ethics, cite examples which you have experienced in your life. So those are some of the best points because it cannot be replicated by the next student. अभी मैं अगर एग्जामिनर हूं और मैं ऐसे क्वेश्चंस चेक कर रहा हूं, मेरे सामने 10 बंदे बैठे हैं जिन्होंने मेंस 365 पढ़ा है, तो उनका आंसर चेंज कहां से होगा? You need to understand that fact. So the more you understand a topic, understand the concept and then apply it. Okay, now this one. So इसका इंट्रोडक्शन कैसे रहेगा? GS1 में पूछा है, GS3 में पूछा है, दोनों में. सूरज, you can try answering this particular question. Same question has been asked in GS1 and GS3. Introduction GS1 में मैं क्या दूंगा first? लोकेशन बेस्ड. क्या फर्स्ट क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र, डेटाबेस किसमें? सेम क्वेश्चन GS1 में है, कौन सा डेटा दोगे? Have you heard of the term called as weight gaining or weight losing industry? What is weight gaining industry? लोड ज्यादा, क्या लोड ज्यादा रहा है? सप्लाई को मेंटेन करने. नहीं नहीं नहीं. Geography, do you guys read geography or not? What is weight gaining industry? Weight gaining industry is that industry जिसका प्रोडक्ट का weight in kgs or tons is more than the weight of its raw materials. जो टेक्निकली रेशियो होता है वो, you need not know that right now. ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे तो पढ़ो. Weight losing industry. What is weight losing industry? The weight of the product is lower than the weight of the raw material. जैसे फिर correct, you lose weight in the process. So cotton is a weight gaining industry or a weight losing industry? because रॉ मटेरियल इतना सारा होगा, जैसे एक शर्ट में नहीं. वो शर्ट नहीं, वो स्टेज पे as such it is weight losing industry. And that so why it is or then how it is linked to the locational factor? A industry being weight gaining or weight losing, all the first timers, are you able to understand a weight gaining and weight losing industry? तो जो weight gaining industry होता है, उसका जो location होता है, that is more towards the market. The reason being the product would be heavier to carry.
ट्रांसपोर्ट में, whereas the weight losing industry are usually located near the raw material areas. What do we see in the case of cotton? The traditional cotton growing areas were located in the regions of black cotton soil. Now, am I clear on this? Everybody online? And this is going to be your best intro while writing in geography. Industries are located, traditionally industries have located near raw material growing areas. अभी सेम इंट्रो अगर मेरे को GS3 में देना है सेम क्वेश्चन का, सूरज इसमें डेटा यूज करना है, where you can talk if you know about industry figures or if you know about some data, ट्रेडिशनल डेटा की कितना ग्रो किया है या फिर यील्ड कितना है एंड व्हाट एल्स, देन यू मूव टू द क्रिटिकल पार्ट व्हिच इज बॉडी. तो यहां पे योर फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी द पॉइंट ऑन कॉटन कल्टीवेशन. कल्टीवेशन प्रोडक्शन कुछ भी, where you're going to write about seeds, pesticides, fertilizers. Then second, you're going to write about transportation and transportation facilities, then probably state of farmers. Then you're going to write about industrial processes. Here you're going to write जिनिंग में जैसे लैक ऑफ मैकेनाइजेशन है, स्मॉल स्केल है, and so on and so forth. When I'm writing the same in GS3, the first point is going to be on yield. यहां पे भी सेम ही लिखा मैंने कॉटन कल्टीवेशन के बारे में, but here I'm starting with the data of yield of what is its potential and what India is at right now. Then I'm going to write about the high duties and taxes. Then I'm going to write about competition from market forces or other markets, and so on and so forth. I'm going to end it by writing about, say, 8 point or something, issues of backward linkages, where I'm going to talk about seeds, pesticides, etc. Point difference नहीं है. You need to understand point difference नहीं है. The way I am treating it, that becomes significantly different. पढ़ना सेम चीज ही है, but how you are going to write it, that will depend upon how well you have written answers. Abhi, one of the questions somebody will ask either here or to his or her mentor, कि if I write this in GS3, is it wrong? हाँ, that is not wrong, but वो difference फिर वो जो low mark range GS3 का इस वजह से आता है. आप 10 में से 4 ले रहे हो या 10 में से 7 ले रहे हो, दिस इज द मेंस में गलती क्या होगा. मेंस में तो सबने प्रीलिम्स क्लियर करके ही मेंस जा रहे हैं और मेन सब्जेक्टिव है. आधे लोगों को तो ये लगता है कि 8 से तो फेंकेंगे. तो
this is how you are going to approach the same question from two aspects, which is the major importance of jargons. मैंने यहाँ पे भी again I'm reiterating कि seeds, pesticides, fertilizers have written it as backward linkages. I'm not writing it directly कि ये, और वहां पे weight losing weight वो से start किया, यहाँ से अलग तरीके से start किया. जो major reason why people lose marks is because of this. अभी अगर GS2 में कभी ये पूछेगा नहीं cotton textile industry. If ever it asked about governance, I would have moved immediately towards themes. Again, point same रहते. कल्टिवेशन के लिए क्या स्कीम, टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, नेशनल मिशन ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल्स कहाँ पे हिट कर रहा है, तो मैं उस तरह से लिखता. द पॉइंट यू आर राइटिंग अ पर्टिकुलर आंसर फॉर अ पर्टिकुलर पेपर, थिंक इट दैट वे.